इरशाद भाई और वेलकम आपका भी कमेंट्री बॉक्स में एक बड़े मुकाबले के साथ। जी हां, महामुकाबला है ये इस टूर्नामेंट का। बिजबिहारा क्रिकेट क्लब बनाम डड्डू रेंजर्स। टॉस बिजबिहारा क्रिकेट क्लब के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और दोनों सलामी बल्लेबाज आदिल गुल्टान और नासिर कुमार अनबीटन टीम इस टूर्नामेंट की दिशा दिखा दी और ये पहला चौका हो सकता है फाइनल मुकाबले का। जी हां, वाइडिश थर्डमैन की ओर जाते हुए गेंद गति का इस्तेमाल किया वहां आदिल गुल्टान ने और चौका बटोरते हुए पहला चौका इस फाइनल्स का आता हुआ। इस चौके के साथ स्कोर 5 बगैर किसी विकेट के नुकसान के पहला ओवर समाप्त होता हुआ। और इरशाद भाई, अगर इस मुकाबले की बात करें, खचाखच मैदान चारों ओर तमाशाइयों से भरा है, महामुकाबला है। डड्डू रेंजर्स, उनका मनोबल 7वें आसमान पर होगा क्योंकि इस टूर्नामेंट की अनबीटन टीम अब तक रही है और कमाल का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में अब तक डड्डू रेंजर्स ने किया है। और हमने देखा कि सेमीफाइनल्स में जिस तरह सभी खिलाड़ियों ने कंट्रीब्यूट किया, चाहे वसीम रजा हो, नासिर रसूल की बात करें, अप फ्रंट आदिल गुल्टान, नासिर कुमार, हर किसी खिलाड़ी ने अपना मार्क छोड़ा है, यहां तक पहुंची हैं, कमाल का क्रिकेट खेला है। और याद रखें आपके इस टूर्नामेंट के अंदर बिजबिहारा क्रिकेट क्लब को भी मुकाबला उनसे जीता था, तो मनोबल कहीं ना कहीं जो है वो बड़ा होगा इस डड्डू रेंजर्स साइड का। दूसरी जानिब एक क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप है बिजबिहारा क्रिकेट क्लब के पास और एक्सपीरियंस के रूप में आपको परवेज रसूल नजर आएंगे, तो एक अच्छा कंटेस्ट बॉल और बैट के बीच में। Yes, it's going to be a furious contest between bat and ball as the local team, Bijbihara Sports Club, they are defending their championship against Dadoo Rangers. Dadoo Rangers are a quality side. They have got a decent combination. They have got the batsmen, they have got the all-rounders, and they have got the bowlers to defend anything they put on board. They got a decent spin attack, and that spin attack is gonna play a very important role in this match. It's going to be Ishfaq Bresnan to start the second over from the market end. Slip in place, swing and a miss for Nasir Kumar as the ball keeps a shade low. It was slower as well outside the off stump, mid on, mid off inside the ring. There is no one behind the bowler's arm, either on the offside or the onside. There is a square leg on the boundary in front of square. Short fine leg inside the ring. Backward point, and there is a gully in place for the right arm seamer, Ishfaq Bresnan. Outside the off stump, edged and gone. Here is the first blood. And there is Nasir Kumar once again trying to guide that ball past the slip cordon. He was caught in no man's land. A good catch taken by Imran Zargar and is out cheaply once more and in the all-important final. बहुत बड़ा विकेट है ये अगर हम नासिर कुमार की बात करें, क्योंकि हम जानते हैं कि नासिर कुमार बहुत खतरनाक विस्फोटक सलामी बल्लेबाज हैं। ये बड़ा विकेट, कमाल की गेंदबाजी इशफाक भट्ट द्वारा इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर शुरुआत में इस खिलाड़ी ने विकेट्स निकाले हैं और ये फाइनल मुकाबला है, महामुकाबला, और दबाव हर किसी खिलाड़ी के ऊपर रहेगा। आसान रहेगा नहीं दबाव झेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए, लेकिन बड़ा विकेट हासिल करते हुए बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब। शुरुआत में नासिर कुमार का विकेट, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है बिजबिहारा क्रिकेट क्लब के लिए। Having third man on the boundary at a wideish position and bowling outside the off stump, getting a little bit of outward moment, and the ball took that feather and the wicketkeeper does the rest behind the stumps. Bijbihara Sports Club have drawn the first blood, and that too a big blow in the form of Nasir Kumar, who can take the game away from the opposition. Brilliant strategy, brilliant bowling, and it's Ishfaq Bresnan yet again. The new batter, Adil Wani, is on strike. Leaves it well alone. That's a good leave
outside the off stump. He's got a slip in place, he's got a gully in place, and he's got a wideish third man on the boundary. So the batsman who tries to play an expensive shot might get that outside edge. That's sufficient for the fielder to grab on the wideish third man boundary, or he might get a faint feather that's easily pouched by the wicketkeeper behind the stumps, or the slip fielder, or there is a gully for that matter as well. Ishfaq Bresnan this time drives with an angle with that bat face open. He was trying to get it away from the fielder at backward point. Hits the fielder, no run. So far it has been a good start. With the ball in hands, Adil Guldan is on 4, using that pace against Asif Rasool and guiding the ball past the third man boundary for 4. Adil Wani, he's a good prospect at number 3. He has that mixed game of his. That is a gorgeous shot. This time the fielder has no chance. Using the pace, using those good wrists, and guiding the ball down to the wideish third man boundary. The fielder was there, but he had absolutely no chance to stop that. That is the first boundary from the bat of Adil Wani. He gets off the mark in style, and Dadoo Rangers moved up to 9 for 1. Catching cover in place, and if the batsman tries to go extravagant in that cover and extra cover region, there is a mid-off and a mid-on inside the ring. Behind the line, pushing it away, straight to Parvez Rasool, who's fielding at mid-off, finishes the over with a dot, 2 gone. It's 9 for 1, as they have lost Nasir Kumar for just 1 of 7, the bowling of Ishfaq Butt in the second over of the innings. We had a brilliant build-up to the finals of Bijbehara Premier League Season 3. 4 teams who made it to the semi-finals. Bijbehara Sports Club and Elegant Strikers, Al Safir Tour and Travels, and Dadoo Rangers. Al Safir were humbled in a one-sided encounter, and Bijbehara Sports Club reigned in that first semi-final to qualify for the semi-finals. Asif Rasool to bowl the second over. Asif Rasool and Ishfaq Butt, they have a happy knack of picking up wickets up front with the new ball. Adil Guldan has got the responsibility. Tight single, and this time Parvez Rasool was not able to pick it up cleanly. Otherwise, that would have been tight at the non-striker's end. Adil Guldan, that important innings, that important half century in the semi-finals, and they have got Adil Wani from Tral. Well, he is a batsman to watch out for in this game. He has got that mixed game. He likes to play that those dabs, those punches, and those drives, and tries to tick the scoreboard over. And then he has got the power game as well to launch on any platform that is set for him. A single to bring Adil Guldan back on strike. The total is 11 for 1. जी हाँ, आसिफ रसूल जो गेंदबाजी कर रहे हैं, तीसरा ओवर पारी का, और बिल्कुल सटीक गेंदबाजी रहती है आसिफ रसूल की। विकेट टू विकेट, और यहां बल्ले से गेंद लग कर गई। अपील जरूर, लेकिन हाफ हार्टेड अपील वहां आसिफ रसूल द्वारा। आदिल गुल्टान और आदिल वानी, 2 बल्लेबाज इस वक्त बीच मैदान के ऊपर। नासिर कुमार का बड़ा विकेट डडू रेंजर्स गवा चुकी है। गिरा 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर। आसिफ रसूल आपको गेंदे देंगे नहीं, और इस बार आगे गेंद, बड़ा स्ट्रोक है आदिल गुल्टान के बल्ले से। ऊंची गई है गेंद, मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाते हुए, और 6 रन लीजिए आदिल गुल्टान के बल्ले से। पहला छक्का इस फाइनल का आदिल गुल्टान के बल्ले से आता हुआ। इस बार आगे गेंद, और इंतजार किया और जड़ दिया छक्का। यहां आदिल गुल्टान ने, कमाल की फॉर्म से ये खिलाड़ी आ रहा है। सेमीफाइनल में 50 रन ठोके थे आदिल गुल्टान ने। आसिफ रसूल, और इस बार हल्के से इस गेंद को पुश करते हुए परवेज रसूल मौजूद। रन बनाने का कोई मौका नहीं। 17 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ। आदिल गुल्टान 11 और आदिल वानी 5। नासिर कुमार जो कि ज्यादा कुछ कर नहीं पाए,
सिर्फ 1 रन बनाकर उन्हें इशफाक बट ने चलता किया। बिजबिहारा प्रीमियर लीग एडिशन 3 का ये फाइनल मुकाबला है और डड्डू रेंजर्स बनाम बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब, खचाखच मैदान भरा हुआ है तमाशाइयों से और लाजवाब मनाजिर इस वक्त मैदान से नजर आ रहे हैं। तमाशाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद मैदान के चारों ओर इस महा मुकाबले को देखने के लिए दूर दूर से लोगों की तादाद यहां मौजूद नजर आ रही है। और फिलहाल खेल का चौथा ओवर शुरू हो रहा है। एक स्लिप कार्डन पर एक खिलाड़ी है, गली पर एक खिलाड़ी, बैकफुट पॉइंट रीजन पर एक खिलाड़ी है, शॉर्ट कवर्स पर एक खिलाड़ी है, मिड ऑफ पर परवेज रसूल, मिड ऑन पर एक खिलाड़ी है, शॉर्ट मिड विकेट पर एक खिलाड़ी और वाइडिश थर्ड मैन के साथ डीप फाइन लेग पर एक खिलाड़ी तैनात। इशफाक बट अगली गेंद के साथ, गेंद लगी है, पैड पर लगी है, अपील जोरदार हो रही है लेकिन अंपायर का इशारा आता हुआ कि गेंद काफी ज्यादा उछाल ले रही है और उस वजह से अंपायर ने इस अपील को नकारा। गेंद को सामने से फील्ड किया गया। स्कोर अभी भी 17, 1 विकेट के नुकसान पर दबाव की स्थिति होगी बल्लेबाज के ऊपर क्योंकि फाइनल मुकाबला है ये इस टूर्नामेंट का। और इशफाक बट क्या कमाल का स्पेल डाल रहे हैं। सेमीफाइनल में भी 3 विकेटें इस खिलाड़ी ने निकाली थी और प्रभाव छोड़ा था। शुरुआती स्पेल्स जो रहते हैं और शुरुआत में जब भी आप विकेट्स निकालते हैं तो किसी भी टीम के ऊपर आप हावी हो जाते हैं और इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद, मौका मिला था टैप करने का लेकिन काफी बार वाइट बॉल का इशारा इस बीच अंपायर की ओर से आता हुआ। आदिल वानी एक सक्षम और मजबूत बल्लेबाज हैं, थोड़ा समय वो जरूर विकेट के ऊपर बिताना चाहेंगे। जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि इस विकेट के ऊपर थोड़ी बहुत नमी जब शुरू में रहती है उस वजह से गेंद बल्ले पर ठीक तरीके से नहीं आता है और अगर आप समय इस विकेट के ऊपर बिताएंगे तो इस विकेट के ऊपर रन्स भी बने हैं। रोहन राठी ने शतक जड़ा था सेमीफाइनल में बिजबिहारा क्रिकेट क्लब के लिए, तो ये रन से बड़ी विकेट हैं। थोड़ा समय आपको इस विकेट के ऊपर बिताएं तो आपके पास रन आएंगे। अगली गेंद और इस बार ठीक पीछे आए, खेला जरूर, बैकफुट पॉइंट रीजन पर खिलाड़ी मौजूद, रनों में कोई इजाफा नहीं। आदिल वानी जरूर समय लेते हुए, और समय लेना होगा इस बल्लेबाज को क्योंकि डिमांडिंग सिचुएशन है। एक विकेट शुरुआत में गवाई है डड्डू रेंजर्स ने, लेकिन इस टीम की अगर हम बात करें, कमाल का कॉम्बिनेशन इस टीम का रहा है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। याद रहे आपको अनबीटन टीम है डड्डू रेंजर्स इस पूरे प्रतियोगिता के अंदर, चाहे लीग स्टेज की बात करें या नॉकआउट स्टेज की बात करें, अनबीटन अब तक खेली आ रही है टीम। लेकिन यहां यह बड़ा मुकाबला है, यह चुनौती है, यह मुकाबला जीतना अनिवार्य है। अगली गेंद और इस बार अच्छी गेंद, अब तक अच्छी बात जो इरशाद भाई रही है और रन लेने का प्रयास है, जोखिम भरा हो सकता था। पीछे खिलाड़ी वापस सही समय पे बेचते हुए और रनों में कोई इजाफा नहीं। एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आदिल वानी की अगर हम बात करें, अब तक रन उन्होंने जरूर बनाए नहीं है लेकिन गेंदों को वो मिडल कर रहे हैं और ये अच्छी खबर है डड्डू रेंजर्स के दृष्टिकोण से। इरशाद भाई, Well, he's a batsman who likes to take his time earlier on. He likes to just play some dot balls, get used to the conditions, and then once he gets his eye in, he is a difficult batter to stop. He is very difficult to bowl at. Adil Wani punches the next ball, finds the fielder, but he was quick to go through for a single. 19 for 1 in the 4th over. Dadoo Rangers, they lost an early wicket yet again. Crowd is in numbers. They have come to cheer their local team, Bijbihara Sports Club. That's why they are in numbers. Dadoo Rangers will give a tough fight for sure, but let's have a look who wins at the end of the day, who would be crowned as the champions. Ishfaq bowling wicket to wicket, does not leave those stumps, and he bowls well within his limitations. That's the hallmark and that's one of his strengths. He sticks to that line and length. Earlier on with a new ball, and if he gets some sort of movement earlier on, well, it's quite difficult to negotiate because he's got that good height as well. Change in field, third man comes up inside the ring. Mid-on goes back on the boundary. What is the idea of the bowler? Is he going to bowl fuller on the pads? Or is he going to play that double bluff? Fine leg and a slip inside the ring. Batter comes outside the ring. There was that double bluff. He was trying to bowl that end dipper from outside the off stump, but Adil Guldan equal to the task.
came up with that shimmy down the track in order to cancel the effect of any swing that Ishfaq would have got on that delivery. Ends the over. Tight single, and they go through for it. Adil Guldan, he is the fittest of this side of Dadoo Rangers, and one of the other strengths of his batting, that quick running between the wickets. He will convert ones into twos. He'll go for those tight singles. Asif Rasool, Adil Wani. Majority of the runs from Adil Wani's bat come up in that position of wideish third man, backward point, and point is quite strong in front of square on the offside and backward of square on the offside. But Asif Rasool is bowling wicket to wicket, and he is sticking to that hard length. He's bowling back of a length, and he is not trying to put any revs on the ball. He's not a massive spinner of the ball, and he relies on those in-dippers, like a fast bowler who tries to bowl in-swingers with a new ball earlier on. Once again, decently bowled. Another dot ball. Dot balls piling up. Asif Rasool. But mentally very strong is Adil Wani. He will not take any risks whatsoever. This time he gets one on the pads. Just turns it away behind square on the onside to pick up another single. This is exact style of his batting. He likes to, if you look at his wagon wheel, majority of the runs come there at behind the wicket on either side. Be it backward of square on the onside or backward of square on the offside. He gets plenty of runs in that region. Guldan, Adil Guldan is on strike. So far it has been a sedate start in the fifth over. A completion of fifth over, 5 done. It's 22 for 1. Adil Guldan is not out on 13. Adil Wani is on 7. And talking about this start, due to that earlier loss of wicket, once again a sedate start, because they would not afford to lose any wicket here. One more wicket and Bijbehara Sports Club are on top of their game, because we know the spinners are yet to come after this. Parvez Rasool will be seen in action, and we'll see the left arm spinner from the other end. So it will be quite hard for them to score runs if they don't have that earlier platform. And this is the platform they're trying to set. And once they set up that platform, it will be quite easy for the other batters to come and follow the footsteps of the two batters. And that's why Adil Guldan and Adil Wani, they are trying to negotiate that earlier threat of Asif Rasool and Ishfaq Butt. And now we're seeing a change in bowling from the market end, and Adil Wani and Adil Guldan both will just try to feast on anything loose, because we know the capabilities of both the batters. 5 overs done. It's 22 for 1. Rohit Dangwal has been brought into the attack. कोई दोहराई इसमें है नहीं. समय जरूर ले रहे हैं डडू रेंजर्स के दोनों बल्लेबाज, क्योंकि शुरुआत में एक विकेट गंवा चुकी है और दबाव जरूर होगा डडू रेंजर्स के ऊपर. और आदिल वानी की अगर हम बात करें, 7 रन पर बल्लेबाजी करें, 13 गेंदों का सामना किया. एक और चैलेंज रोहित डंगवाल के रूप में बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए छोटे रन अप के साथ. फ्लाइटेड गेंद पैड लाइंस पे जरूर हल्की सी अपील, टैप करना चाहते थे आदिल वानी. और दबाव है डडू रेंजर्स के ऊपर इस स्थिति पे, क्योंकि रन सिर्फ 4.5 की औसत से बन रहे हैं और खराब गेंदों का इंतजार हो रहा है और डडू रेंजर्स के बल्लेबाजों द्वारा. समय और बढ़िया स्ट्रोक, गैप में है स्ट्रोक, कड़क शॉट है, 4 रन मिलेंगे. फ्लाइटेड एक बार फिर ड्राइव करते हुए वहां आदिल वानी, और ये क्षमता है इस खिलाड़ी की. समय बिताने के बाद वो लूज गेंदों का इंतजार करेंगे, खराब गेंदों का इंतजार करेंगे और सही नसीहत देने का
प्रयास रहेगा आदिल वानी की ओर से और इस चौके के साथ स्कोर अब जाकर पहुंचता हुआ 26, एक विकेट के नुकसान पर छठा ओवर, आखिरी ओवर पावर प्ले का है। शुरुआत जरूर धीमी, लेकिन इस बार फिर पैट लाइंस पे गेंद, लेग स्टंप पर गेंद थी, मोड़ना जरूर चाह रहे थे कलाइयों के सारे आदिल वानी, लेकिन गेंद पैड से टकराकर सामने से गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का कोई भी अवसर इस बार बल्लेबाज के पास नहीं। शॉट थर्ड मैन गली, बैकफुट पॉइंट, शॉट कवर पे परवेज रसूल फील्ड कर रहे, फ्लाइटेड गेंद एक बार फिर रन साइड की ओर निकाला है और इस बार भी गैप में एक और चौका आदिल वानी के बल्ले से आता हुआ। कमाल की बल्लेबाजी, गेंद के पिच तक पहुंचे और स्ट्रोक जड़ा, एक और स्ट्रोक, आदिल वानी का मनोबल बढ़ता होगा इन स्ट्रोक से। चौके के साथ 30, एक विकेट के नुकसान पर। It does not make any sense to flight the ball when you have mid on and mid off inside the ring and you're inviting the batsman to go down the ground and he is taking you on, picking up 2 easy boundaries. Rohit Dangwal, this time much better line, although it was on that leg stump as Adil Wani misses a flick, hit on the pads, no run. Adil Wani is a tall, lanky number 3 batsman. Takes his time earlier on, but once he gets that invitation and once he's set, he will punish the bowlers. That's good line. Once again, tucking the batsman up, not making any impact. The power play is done and dusted. 30 for 1. Bijbehara Sports Club, they are bowling first and Dadoo Rangers have lost Nasir Kumar earlier on in the second over. They're trying to build a partnership as the crowd are building up in numbers here at Bijbehara Sports Field. खुदा न खास्ता, क्या आपको इस बात का एहसास है कि अगर आप हेरोइन या ड्रग्स के शिकार हो गए, आपकी जिंदगी हर एतबार से तबाह व बर्बाद हो जाएगी। आपकी जिंदगी का हर पल, हर लम्हा, हर खुशी तबाह व बर्बाद हो जाएगी। क्या आपको इस बात का एहसास है कि आप न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने अहलो अयाल की खुशियाँ और सुकून भी तबाह व बर्बाद कर देते हो? इस बात को दिमाग में रखिए। आपको हेरोइन और ड्रग्स देने वाले पहले डोज आपको फ्री में देंगे, फिर आपको आदी करके आपको हर एतबार से तबाह व बर्बाद कर देंगे। हेरोइन ड्रग्स की 1 ग्राम 3। He's in his 4th over, Asif Rasool. Current run rate might be around 5 runs and over. This is a decent start from Bijbehara Sports Club. Asif Rasool, much similar in action to his brother Parvez Rasool, but he's not a massive spinner like his brother Parvez Rasool, putting up a lot of revs on the ball. Asif Rasool relies heavy on bowling those dot deliveries, not leaving the stumps at all, trying to bowl quick, trying to bowl flat. Adil Wani so far has been good, 15 of 20. Adil Guldan, 14 of 12. Guides the ball, finds short third man, no run. Good field placement. He knows what's running through the mind of Adil Guldan and Adil Wani. They like to score runs behind the wicket on the offside. That's why short third man is inside the ring. And there is a gap between gully and short third man. X1, top of the bat, but that will land safely outside the fence. It's hit that top of the roof of the cameraman situated at deep square leg. That was a half tracker and put away by the tall Adil Guldan over deep square leg, and that's a humongous 6. This is what exactly I was mentioning when Adil Wani went into bat. He's got that mixed skill of hitting boundaries and nudging the ball in the gaps. This time he's looking to
turn it away towards square leg. There's a deep backward square leg on the boundary. Finishes his spell with a dot. 4 overs, no marins, no wicket for 22. 7 done. It's 37 for 1. Adil Wani is looking good on 21. 3 से 4,000 में बेची जाती है। हर रोज आपको 1-1 ग्राम का इस्तेमाल जी हाँ, जो समय बिताया था यहाँ आदिल वानी ने, अब उन कामों को करने के लिए मजबूर ना करे जो इंसानियत के लिए एक लानत है। Issued in public interest by Civil Society Forum of Kashmir. क्या आप जानते हैं ड्रग्स की वजह से आपकी आने वाली औलाद खतरनाक जिस्मानी और दिमागी बीमारी की शिकार हो सकती है। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक एबनॉर्मल औलाद को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप मिसकैरेज के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स बहुत बेरहम है, इनका सहारा ना लीजिए। ये न सिर्फ आपको बल्कि आपकी आने वाली औलाद को भी जिस्मानी एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पे रोहित डंगवाल, लेग स्टंप पर गेंद। अब तक खराब गेंदबाजी रही है रोहित डंगवाल की। अगर हम बात करें, दिशा से लगातार भटक रहे हैं और आगे गेंदें कर रहे हैं, जिस वजह से पिछले ओवर में 2 शॉट्स जड़े थे आदिल वानी ने और पिछले ओवर में कमाल का छक्का आदिल वानी के बल्ले से देखने को मिला था। आसिफ रसूल, उन्होंने अपना स्पेल समाप्त किया। 4 ओवर 22 विकेट, हालांकि आज मिला नहीं रोहित डंगवाल। और इस बार फिर मिडिल और लेग स्टंप पर हल्की से टैप किया आदिल गुलडान ने। दूसरा रन देखना चाह रहे हैं और ये जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट्स नजर आते हुए और ये करने का प्रयास हो रहा है यहां बल्लेबाजों द्वारा। आउटफील्ड में खिलाड़ी है, उन पे दबाव डालने का प्रयास। कमाल की रनिंग एक बार फिर बिटवीन द विकेट्स नजर आते हुए। 2 सिंगल्स के साथ स्कोर अब चला गया है 40। 1 विकेट के नुकसान पर डडू रेंजर्स बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करते हुए और एक बार फिर पैड लाइंस पे मोड़ा है ऑन साइड की ओर। उस ओर खिलाड़ी है, एक सिंगल मिलेगा। और अगर अब तक बात करें रोहित डंगवाल की, तो वो ले नहीं पकड़ पा रहे हैं जिसके लिए जाने जाते हैं रोहित डंगवाल। अब तक आगे गेंदें की हैं और खासकर लेग स्टंप पे ज्यादा गेंदें ड्रिफ्ट हो रही है और अब तक ज्यादा मदद भी इस विकेट के ऊपर उनको मिला नहीं है। और देखिए बैट के बीचों बीच गेंद लगते हुए, ये मैं शुरुआत में बात कर रहा था, इस खिलाड़ी की खासियतें समय बिताते हैं और फिर बीच में बड़े स्ट्रोक्स भी आपको आदिल वानी के बल्ले से नजर आएंगे। अब तक बिल्कुल सक्षम नजर आए हैं, बिल्कुल भी दुविधा में नजर नहीं आए आदिल वानी की एक छोर से अगर बात करें। और बीट होते हुए विकेट कीपर भी और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए तेज करने का प्रयास किया था इस बार रोहित डंगवाल। काफी रन अब तक खर्च किए, 17 रन दूसरा ओवर। 46 1 विकेट के नुकसान पर आदिल गुलडान 21 और आदिल वानी 22। अच्छी साझेदारी नजर आती हुई 41 रनों की दूसरे विकेट के लिए। शुरू में ही विकेट गंवाया था डडू रेंजर्स ने और इस बार हवा में गेंद जरूर, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद। दूसरे रन देखना चाह रहे हैं लेकिन एक ही सिंगल, क्योंकि लॉन्ग ऑन रीजन पर खिलाड़ी मौजूद। एक सिंगल के साथ स्कोर 47 1 विकेट के नुकसान पर। एक खराब शुरुआत के बाद दोनों बल्लेबाजों का प्रयास हो रहा है कि मिडिल में एक पार्टनरशिप बनाई जाए और अब तक रोहित डंगवाल को हावी होने नहीं दिया आदिल वानी ने। ठीक पीछे आए, स्ट्रोक लिया ऑन साइड की ओर, उस ओर खिलाड़ी एक सिंगल मिलेगा। ओवर समाप्त 8 ओवरों के बाद 48 1 विकेट के नुकसान पर। जरूर धीमी शुरुआत रही है अरशाद भाई यहां डडू रेंजर्स की, लेकिन वो खुश होंगे क्योंकि विकेट्स इन हैंड बहुत महत्वपूर्ण आखिरी 10 ओवर फिर वो देखना चाहेंगे वो बड़े स्ट्रोक्स के लिए। और एक बड़ा स्कोर जिसकी हम बात कर रहे थे 140 150 तक वो जाना चाहेगी क्योंकि शुरुआत खराब रही थी। लेकिन आदिल वानी और आदिल गुलडान दोनों सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं, थोड़ा समय बिता रहे हैं, खराब गेंदों को नसीहत दे रहे हैं। क्या ये अच्छी रणनीति है, क्या ये अच्छा माइंड सेट है जिस अप्रोच के साथ डडू रेंजर्स बल्लेबाजी कर रहे हैं? Well, they had to, because they had lost Nasir Kumar earlier on, who was that batsman to come up and bosh the bowlers around. And then when they lost him earlier on, it was imperative for them to build some sort of a platform. And here is Parvez Rasool into the attack to bowl his off spin, bowling at a decent pace. And if he gets that ball to turn in his stock ball, that massive off spinner,
Gets many a batsman out with that. Adil Wani going for the big one. First up, inside edge. You're flirting with danger if you're trying to just go down the ground with that delivery that comes in after pitching. That big in dipper from Parvez Rasool. He's got a long on. He's got a deep mid wicket to protect that shot if the batsman tries to play. This is good technique. And this is brilliant from Adil Guldan. Not taking any risks against the champion off spinner. And trying to give him proper respect. And picking up ones and twos. 50 comes up for Dadoo Rangers in the 9th over. There's a catching mid wicket now in place. Catching cover in place. Parvez Rasool this time punches it. The sweet sound of the ball hitting the middle of the bat on that occasion. And Adil Wani has middled everything today. He has to play a big one. He's got to start in this match. That is a good technique. If you are an Adil Wani trying to knock the ball in the gaps, the fielder was there inside the ring at short mid wicket, but he had no chance. Deep mid wicket, deep square leg, plenty of protection for Parvez Rasool. This time he goes for a full-blooded swipe across the line. Manages to hit it with the inside half of the bat down towards deep square leg. Picks up a single. So runs coming in singles in this over so far. 4 of them from the 5 deliveries bowled by Parvez Rasool. Adil Wani and Adil Guldan. They won't take any risks against Parvez Rasool. This time he goes and he's gone. What a catch! That is a screamer. At cover, throwing his body and plucking it out of thin air. Gorgeous catch at cover. And Adil Wani has to go back. And this is the exact danger that I was discussing. That if you are trying to go after Parvez Rasool, you are flirting with danger. This time the ball was once again angled into the batsman and he was trying to go offside, catching that outside off of the blade and in the air. And what about that grab? That is a perfect grab. Good technique, both the hands. And then the follow-up was brilliant. And that is the first wicket for Parvez Rasool. Dadoo Rangers lose their second in the form of Adil Wani. Once again, have a look at this. That one, he was trying to go offside, outside half of the bat. And that is an absolute specky in the field. Ahmed Bade, a gun fielder, takes an important catch. And Parvez Rasool strikes in his first over. 9 done, it's 52 for 2. जी हाँ, जो हम बात कर रहे थे आदिल वानी के बारे में कि मिडिल गेंदों को करें और जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की थी, लगता था कि एक बड़ा स्कोर बना के जाएंगे, लेकिन इस बार परवेज रसूल के ऊपर वो जोखिम लेना चाहते थे. बड़ा स्ट्रोक का चयन किया था, शॉर्ट कवर के ऊपर से मारने का प्रयास, लेकिन वो एलिवेशन मिला नहीं वहां पे और कमाल का कैच अपने बाएं और अहमद पांडे ने लिया और आदिल वानी वापस जाएंगे. दूसरा झटका डड्डू रेंजर्स को. 52 के स्कोर पर 9 ओवरों का खेल समाप्त. धीमी शुरुआत रही है डड्डू रेंजर्स की. अगर हम बात करें, सिर्फ 5.5 की औसत से रन्स बन रहे हैं अब तक, जो कि अच्छी रन रेट मानी नहीं जाती T20 क्रिकेट के दृष्टिकोण से. अगर हम देखें, पहली गेंद बड़ा स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे, उस लॉग स्वीप के लिए गए थे इस बार आदिल गुलडान, लेकिन वो टाइम नहीं कर पाए. इस बार गति नहीं दी वहां गेंदबाज रोहित डंगवाल की. अगर हम बात करें, चतुराई से गेंदबाजी कर रहे हैं रोहित डंगवाल. हालांकि अब तक महंगे जरूर साबित हुए हैं, लेकिन प्रयास रहेगा एक विकेट लेने का. 10वां ओवर है ये खेल का. धीमी शुरुआत डड्डू रेंजर्स की और अच्छी गेंद एक बार फिर मजबूर किया बल्लेबाज को डिफेंस के ऊपर. ठीक बैट एंड पैड साथ मिलाते हुए वहां पर आदिल गुलडान. ये दबाव है इस वक्त डड्डू रेंजर्स के ऊपर. क्या बड़ा स्ट्रोक आएगा इस ओवर में? अगली गेंद, जी हां, ये बड़ा शॉट है और बहुत ऊंची गेंद गई है और बहुत दूर भी भेजी है आदिल गुलडान ने. कमाल का ये स्ट्रोक आता हुआ लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से गेंद 6 रन के लिए.
और बहुत दूर 102 मीटर का ये छक्का आदिल गुलडान के बल्ले से। उन्होंने समय जरूर लिया है इस खिलाड़ी ने, लेकिन समय के साथ वो अब गेयर्स भी बदल लेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहां रन्स की दरकार है डडू रेंजर्स के लिए। कमाल की शुरुआत इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर दी है डडू रेंजर्स को आदिल गुलडान ने, और हमें याद है कि सेमीफाइनल्स में वो 52 रन्स की विस्फोटक पारी खेली थी इस खिलाड़ी ने। जरूर समय बिता रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि ये बड़ा मुकाबला है, बड़ा मंच है, और यहां आप छाप छोड़ना चाहेंगे, यहां प्रदर्शन करना चाहेंगे। यहां बड़े मंच पे जब भी आप रन्स बनाते हैं तो आपका कद बहुत ऊंचा हो जाता है, और इससे बड़ा स्टेज शायद ही कश्मीर के अंदर आपको कहीं मिलेगा। It's an important innings once again from an important player. That was the invitation, and that was in the slot. Adil Guldan, he never misses on such opportunities. He has put it over the boundary, and this time he goes again, but this time all along the ground. Fielder there at deep mid-on will pick the ball up, throw it in. The batsman cross over for a single, immediately hitting that 6 and sticking to the basics of nudging the ball around and rotating the strike. That's good skills. Rohit Dangwal has gone for plenty so far. He's in his third over. This time flatter on the stumps. Chance of a run out at the other end. Had Asif Rasool hit with a direct hit, it would have been curtains for Asif Manzoor. All's well that ends well. He's home. The ball did not hit the stumps, as Rohit Dangwal between the umpire and the stumps. This time he throws his hands at that, and it has been smashed backward a point on the offside. 4 to finish the over, halfway stage, and Adil Guldan is putting on a show here. 35-64 for 2. Dadoo Rangers trying to resurrect this innings after the loss of Adil Wani. और दिमागी तौर पे तबाह व बर्बाद कर देते हैं। Issued in public interest by Civil Society Forum of आदिल गुलडान वो बड़े शॉट्स के लिए अब जा रहे हैं। मालूम है कि जो रन रेट है वो सिर्फ 6 के आसपास, 64-10 ओवर्स के बाद परवेज रसूल, और बढ़िया स्ट्रोक वहां पे, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक सिंगल मिलेगा, दूसरा रन चुराने का प्रयास जरूर किया, लेकिन मना करते हुए आदिल गुलडान की अगर हम बात करें 35 पे वो अब पहुंचे हैं। 30 गेंदों का सामना किया है रोहित डंगवाल के ऊपर, उन्होंने आक्रमण किया है, बड़े शॉट्स हावी होने नहीं दिया है रोहित डंगवाल को, लेकिन इस विकेट के ऊपर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने अपनी छाप छोड़ी है पूरे टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन रोहित डंगवाल को आज ऑफ कलर किया है आदिल गुलडान ने। वो बड़े शॉट्स लगाकर डाउन द ग्राउंड, वो शॉट्स, कमाल की बल्लेबाजी आदिल गुलडान के बल्ले से, लेकिन स्टार्ट मिला है, इसको वो कन्वर्ट करना चाहेंगे। अभी बहुत काम आदिल गुलडान और डडू रेंजर्स को करना है। और हवा में चिप शॉट, गैप में भी गेंद जाते हुए पीछे खिलाड़ी वो दूसरा रन देखना चाहेंगे। और जी हां, ये बढ़िया रनिंग, ये बढ़िया सूझबूझ भरी बल्लेबाजी हो रही है। उन्हें मालूम है कि परवेज रसूल के ऊपर आप ज्यादा रिस्क ले नहीं सकते हैं। गैप्स में स्ट्रोक ढूंढते हुए और सिंगल्स को कन्वर्ट करते हुए डबल्स में अगर हम आदिल गुलडान की बल्लेबाजी की बात करें, और ये अच्छी सोच नजर आते हुए 67 2 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर खेल का जारी परवेज रसूल, और इस बार धीमी गति से आई हुई गेंद आने का इंतजार किया, हल्के से टैप करते हुए, बिल्कुल भी यहां जोखिम नहीं ले रहे हैं परवेज रसूल के ऊपर, क्योंकि परवेज रसूल लेजेंडरी स्पिनर जम्मू कश्मीर से, और मालूम है कि उनके पास काफी वेरिएशंस आपको नजर आएंगे। वो धीमी गति से गेंद, चतुराई से गेंदबाजी करते हैं, स्टॉक बॉल, तेज बॉल, हर एक गेंद इस खिलाड़ी के पास मौजूद हैं, और उस वजह से यहां संभल की बल्लेबाजी कर रहे हैं आदिल गुलडान। और एक समय उन्होंने बिताया है 11 ओवर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब गेयर्स बदलने होंगे। और बढ़िया गेंद एक बार फिर, बिल्कुल विकेट टू विकेट, सटीक गेंदबाजी इससे कहते हैं। जो यंग युवा खिलाड़ी देख रहे हैं परवेज रसूल, दुनिया में सभी जगह इस खिलाड़ी ने गेंदबाजी की है, और जो यंग क्रिकेटर्स, यंग स्पिनर्स देख रहे हैं इस गेंदबाजी को, वो प्रेरणा ले सकते हैं, वो सीख ले सकते हैं। बढ़िया स्ट्रोक इस बार, पीछे खिलाड़ी जरूर, और कमाल की फील्डिंग, वहां एक ही रन, और फील्डिंग आज रही है कमाल की। यहां अगर हम बात करें बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब की, चाहे ग्राउंड फील्डिंग हो या कैचिंग हो, कमाल आज किया है बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब ने।
और ये एक अच्छी टीम की निशानी, बड़े मुकाबलों के अंदर अपना मार्क छोड़ती हैं और परवेज रसूल के नेतृत्व में ये टीम आज मैदान के ऊपर इस बड़े मुकाबले के अंदर। आसिफ रसूल, इस गेंद को वापस परवेज रसूल का ये ओवर समाप्त। अब तक 2 ओवर 8 रन और 1 विकेट, हमेशा मार्क छोड़ते हैं ये खिलाड़ी, चाहे बल्ले की बात करें गेंद से और फील्ड में हमेशा अलर्ट रहते हैं परवेज रसूल। आन बान शान है जम्मू कश्मीर क्रिकेट की, लेजेंडरी क्रिकेटर। 11 ओवर समाप्त, 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और दूसरी ओवर अगर हम बात करें जो रन रेट है इरशाद भाई, वो सिर्फ 6.5 के औसत से रन्स बन रहे हैं। अब मेरे ख्याल से गियर्स बदलने पड़ेंगे यहां से, क्योंकि अभी भी आपके पास 8 विकेट है, 9 ओवरों का खेल आना बाकी। तो आप अगर कंपिटिटिव टोटल 140 150 देखना चाहते हैं, फिर आपको वो रिस्क लेना पड़ेगा, वो बड़े शॉट्स खेलने पड़ेंगे यहां डेडू रेंजर्स को। फिलहाल नया ओवर शुरू होता हुआ रोहित डंगवाल 3 ओवर 31 रन आज खर्च किए हैं और कप्तान परवेज रसूल लगातार उन पे भरोसा जताते हुए आखिरी ओवर अपने कोटे का आदिल गुलडान को टैप करते हुए ऑन साइड की और एक सिंगल मिलेगा। और यहां हमने देखा है कि बहुत दफा शुरुआत मिली है बल्लेबाजों को, लेकिन फिर खराब स्ट्रोक का चयन करके बल्लेबाज आउट हुए हैं। लेकिन आदिल गुलडान आज इस स्टार्ट को कन्वर्ट एक बड़े स्कोर में करना चाहेंगे। ये बड़ा मंच है, ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, बीपीएल एडिशन 3 का ये फाइनल मुकाबला। और लीजिए कप्तान आसिफ मंजूर अब आए हैं और स्टेज सेट हैं यहां पर आसिफ मंजूर के लिए, क्योंकि एक रिस्क, एक खिलाड़ी को इन 2 में से रिस्क लेना पड़ेगा, बड़े शॉट्स के लिए जाना पड़ेगा अगर डड्डू रेंजर्स एक सम्मानजनक स्कोर तक जाना चाहती हैं। रोहित डंगवाल फिलहाल सिंगल्स लेती हुए डड्डू रेंजर्स, और 2 सिंगल अब तक इस ओवर में आए हैं। स्कोर 71 रन 2 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट की अगर हम बात करें 6.5 की औसत से रन्स बन रहे हैं और इस रफ्तार से 125 तक ही जा सकती है। और लीजिए आने का इंतजार किया, स्ट्रोक जरूर जड़ा है। और इस ओवर में अब तक अगर हम बात करें इरशाद भाई रोहित डंगवाल की, तो पेस बिल्कुल भी इस खिलाड़ी ने दी नहीं है, स्लोअर गति से गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये एक अच्छी सोच हो सकती है रोहित डंगवाल द्वारा, क्योंकि आज विकेट लेस रहे हैं और रन्स के लिए गए हैं रोहित डंगवाल। पीछे आया और वहां मिसफील्ड होता हुआ अहमद पांडे बैकफुट पॉइंट रीजन पर, लेकिन ज्यादा छाप छोड़ेंगे नहीं क्योंकि एक ही रन मिलेगा। स्ट्रोक में उतनी गति नहीं थी, बैकफुट पर आए थे कप्तान आसिफ मंजूर। 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस पार्टनरशिप की अगर हम बात करें 16 गेंदों पर 21 रन जोड़े हैं तीसरे विकेट के लिए आसिफ मंजूर और आदिल गुलडान की जोड़ी ने। अगली गेंद और इस बार पैड लाइंस पे गेंद आती हुई आदिल गुलडान समय इस खिलाड़ी ने बिताया है। 12वां ओवर पारी का है, 29 गेंदों पर 40 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 130 की स्ट्राइक रेट, लेकिन इसे बढ़ाना चाहेंगे, वो एक्सीलरेटर पे पांव दबाना पड़ेगा। बड़ा स्ट्रोक है ये, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद। अकॉर्डिंग फील्डिंग इस ओवर में गेंदबाजी रही है। ओवर समाप्त, 12 ओवरों का खेल समाप्त। 74 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 74 रन 2 विकेट के नुकसान पर डड्डू रेंजर्स। और इरशाद भाई अब 8 ओवरों का खेल आना बाकी। जिस तरह रन्स बन रहे हैं डड्डू रेंजर्स के लिए 6.17 की औसत है इस समय, और इस रफ्तार से जो आप प्रोजेक्टेड स्कोर देख रहे हैं वो 123 है, जो कि कम्पिटिटिव टोटल होगा नहीं। तो यहां से गेयर्स बदलने पड़ेंगे इन 2 बल्लेबाजों को, कि आप सेटल हुए हैं, खासकर आदिल गुलडान 30 गेंदें उसने के लिए और आसिफ मंजूर टीम के कप्तान। कहीं ना कहीं डड्डू रेंजर्स को अभी माइंड सेट चेंज करके बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाना पड़ेगा और वो रिस्क एलिमेंट रहेगा उसमें, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा यहां से डड्डू रेंजर्स को। Yeah, absolutely. Now or nowhere, now or never is the situation for Dadoo Rangers. And one of these 2 batters, they had to try to unsettle the bowlers because Parvez Rasool has taken himself off, and it's going to be Rahul to bowl some left arm spin from the school end. Adil Guldan well set, 41 of 31, long on, long off, deep mid wicket. Deep backward square leg on the onside. This time he goes with that horizontal bat shot on the onside, backward of square. On the offside sweeper. He's fielding at cover boundary. Third man is up inside the ring. Fine leg is inside the ring as well. This time gets it fine. The fielder is off to the ball. The fielder does well, and the batsman
completed the second run. Is trying to go finer, and that's a good idea. If you are trying to negotiate the bowler who's bowling on the pads, fine leg inside the ring, and that's why they're trying to go finer, because there's a deep backward square leg on the boundary, and he's trying to go fine to beat that fielder inside the ring at 45. And this time the ball of the pads into the wickets. It's a wicket, and Asif Manzoor has to go back. He was trying to eye that mid-wicket boundary. That ball was bowled slower through the air. Misses the line of the ball completely. Let's have a look at that. Off the pads, dislodging the bails. And Asif Manzoor, nothing with a bat today. Wicket number 3 for Bijbehara Sports Club. And they are 77 for 3 in the 13th. Ball off the pants, ricocheting off the pants. It was an innocuous delivery, but dragging it on to the stumps. The big one, Wasim Raza comes out to bat. Kashmir. Strike rate of 130. He has string of those big scores in the past innings. Wasim Raza, experience, skill, and he likes to bat deep. 7 more overs to come after this. Losing wickets at crucial junctures. Left arm spinner is bowling slower through the air. Again that angle doing the trick across the left-hander. And now Parvez Rasool, change in field. He was at short mid-wicket, and now he comes at short fine leg because he likes to ramp that behind the wicket. Good idea once again, reading the batter. This time he drives it down the ground, is off the mark with that single. And over number 13 comes to a close. Dadoo Rangers are struggling, 78 for 3. 7 more overs to come. They need to put their foot down on the pedal. They need to score briskly. Parvez Rasool is changing his ends. He's going to bowl from the market end. Talking about the number of spectators, they are in numbers here. And it's not about they are supporting only Bijbehara Sports Club. They are a knowledgeable crowd. They are supporting both the teams and they are supporting good cricket. That's good news from cricket's perspective. Cricket should be supported no matter who the team is playing and no matter the players who are playing in that particular match. And if they happen to be your local heroes, they're doing a good job, then you are on to just cheer them, to have their backs, but you need to support any good performance. Parvez Rasool, this time left arm, a left-hander against that right arm off spinner. That's a good matchup, and that's why Parvez Rasool bringing himself on from the market end. That's good game awareness, because right arm off spinner against left-handers have been nightmares for left-handers. Slanting the ball across, having slip in place. We've seen so many right-handers, left-handers struggling against right arm off spinners. I remember that
First delivery of a first match in IPL, dismissing Shikhar Dhawan with a peach. Parvez Rasool. This time quicker. Adil Guldan was trying to go mid-wicket, hits him on the shoulder. Have a look at that once more. Extracting a bit of bounce from that end. Parvez Rasool. That one was slanted in once more. Parvez Rasool. Sometimes the ball goes on with the arm. Sometimes after pitching, it goes straight. That was the exact delivery. He was looking for some spin. I wasn't there. Parvez Rasool to bowl. This time goes for the reverse. It's up in the air. Fielder tries to get around and he puts it down. That was a difficult catch coming from the boundary. He was trying to take that. It would have been an absolute blinder and it would have been the catch of the tournament for sure. Getting fingertips to that ball and the ball trickling into the fence for 4. Such is the impact of Parvez Rasool. And Adil Guldan was frustrated, switching his grip, trying to go reverse. That was ballooned up in the air. Lucky escape for Adil Guldan. He's 46 not out. Once again, quicker. No time to go for that pull. Parvez Rasool, well, you can't just attempt any slog sweep horizontal bat shot because he bowls with some pace. And look at that delivery. That was ripping in, putting revs on the ball and with a pace behind the ball. That's brilliant bowling. This time slowing the ball up. This time it was spot on. Putting the ball in the gap behind square on the offside, picking up a single. Square on the onside, beg a pardon. 47 not out from 36. A lot of time and a lot of deliveries being eaten up by Adil Guldan in this innings. He needs to get a go now. He needs to pack a punch. He will definitely pack a punch because he's got that power game as well. Wasim Raza is 2 of 4. Final ball of the third over from Parvez Rasool. 1 for 14 thus far. Nudging the ball on the offside. Tight single taken to finish the over. 14 done. It's 85 for 3. 6 more overs to come. क्या आपको इस बात का एहसास है कि अगर आप हेरोइन या ड्रग्स के शिकार हो गए, आपकी जिंदगी हर एतबार से तबाह व बर्बाद हो शुक्रिया इरशाद। जिंदगी का हर पल, हर लम्हा 83 खिलाड़ियों के आउट होने पर क्या आपको इस बात का एहसास है प्रीमियर लीग का बल्कि फाइनल ख्याल की खुशियाँ और सुकून भी तबाह व बर्बाद कर देते हो। इस बात को दिमाग में रखिए। आपको हेरोइन और ड्रग्स देने वाले पहले डोज आपको फ्री में देंगे, फिर आपको आदी करके आपको हर एतबार से तबाह व बर्बाद कर देंगे। हेरोइन ड्रग्स की 1 ग्राम 3 से 4 हजार में बेची जाती है। हर रोज आपको 1 ग्राम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहीं आपकी ये लत वसीम रजा सामना कर रहे हैं। शॉर्ट गेंद थी, इस मर्तबा जाने दिया विकेट कीपर के लिए और अंपायर ने अपने दोनों हाथ फैलाकर इस बात का इशारा कर दिया कि वाइट बॉल है। 1 रन का इजाफा स्कोर में 86 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर। एक मर्तबा फिर गेंद करेंगे वसीम रजा को। तिरछे रन अब के साथ आए। गेंद की इस मर्तबा जोरदार अंदाज में इस गेंद को खेले। आउट होने का खतरा नहीं, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गिरी। अंपायर ने अपने दोनों हाथ हवा में बुलंद के इस बात का इशारा कर दिया कि ये बुलंद वाला छक्का है। बहुत ही उम्दा शॉट खेले इस मर्तबा वसीम रजा और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गिरी 6 रन के लिए। 91-92 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर 15वें ओवर का खेल जारी है। तमाशाई से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। एक मर्तबा फिर आए, एक मर्तबा फिर जोरदार अंदाज में खेले और इस मर्तबा एक बुलंद वाला छक्का वसीम रजा के बल्ले से। वसीम रजा ने 2 मुसलसल गेंदों पर 2 छक्के लगाकर सनसनी फैला दी है 20-12 स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों में। बहुत ही अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे वसीम रजा। तीसरी गेंद का सामना कर रहे हैं। तिरछे रन के साथ आए। गेंद की शॉर्ट गेंद थी, इस गेंद को जोरदार अंदाज में खेलना चाहते थे। गेंद उनके पैर पर लगी, विकेट के पीछे से गए विकेट कीपर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया बगैर किसी रन के। 98 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर 15वें ओवर का खेल जारी है। एक मर्तबा फिर गेंद करेंगे वसीम रजा को। इस मर्तबा इस गेंद को खेले डीप लॉन्ग ऑन की जानिब
एक रन बनाने का मौका था। इस एक रन के साथ ही डडू रेंजर्स का स्कोर 99 खिलाड़ियों के आउट होने पर। अपने उन सामीन को बताता चलूं जो अभी भी हमसे लाइव नशरियात में जुड़ चुके। आज बीपीएल यानी कि 2012 प्रीमियर लीग का फाइनल मैच 2012 स्पोर्ट्स और डडू रेंजर्स के दरमियान जारी है। 99 खिलाड़ियों के आउट होने पर 15वें ओवर का खेल जारी है। तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम में एक मरतबा फिर इस मरतबा आदिल गुलडान के सामना कर रहे। इस गेंद को खेले डीप स्क्वायर लेग की जानिब और चहलकदमी के अंदाज में दोनों बैट्समैनों ने छोड़ बदल दिया और इसके साथ ही डडू रेंजर्स का स्कोर 100। ये जो तालियों की गूंज आपके कानों तक आ रही है, 100 रन डडू रेंजर्स का स्कोर और उनके 3 मुस्तनद बैट्समैन वापस पवेलियन लौट चुके हैं। अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया अभी तक आदिल गुलडान ने, जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हैं। एक मरतबा फिर इस मरतबा सामने कर रहे रजा। शॉर्ट गेंद थी, इस गेंद को कट करना चाहते थे खतरनाक अंदाज में। विकेटों के साथ चिपके खड़े विकेट कीपर इमरान ने गेंद को गैदर किया और अंपायर ने कैप थमा दी कि आपका ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। इसके साथ ही 15वें ओवर के इख्तिताम पर डडू रेंजर्स का स्कोर 100, 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर। और माइक थमा देता हूं अपने साथी कमेंटेटर को। डडू रेंजर्स 3 विकेट के नुकसान पर 15 ओवरों का खेल समाप्त। और आते ही बड़ा स्ट्रोक है, ऊंची गेंद भेजी है आदिल गुलडान ने और नीचे 6 रन अर्जित करेंगे और 50 रन पूरे होते हुए आदिल गुलडान के बल्ले से कमाल की बल्लेबाजी आदिल गुलडान ने की है। समय जरूर इस खिलाड़ी ने विकेट के ऊपर बिताया है, लेकिन इस बड़े मंच पर बड़े स्टेज पे अर्धशतक जोड़ते हुए आदिल गुलडान और आक्रमण भी किसके ऊपर करते हुए परवेज रसूल के ऊपर और पहले गेंद को 6 रन के लिए कन्वर्ट करते हुए वसीम रजा की दूसरे छोर से अगर बात की जाए इस टूर्नामेंट के अंदर इंपैक्टफुल इनिंग्स इस खिलाड़ी ने खेली है। सेमीफाइनल का वो मुकाबला 29 रन बैट से और 3 विकेट गेंद से इस खिलाड़ी ने कमाल का प्रदर्शन किया है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर डड्डू रेंजर्स के लिए। और नई गेंद बुलाई गई है क्योंकि गेंद को काफी दूर भेजा है आदिल गुलडान ने। 50 रन इस खिलाड़ी का पूरे होते हुए सेमीफाइनल में भी अर्धशतक जड़ा था इस खिलाड़ी ने और पहली गेंद पर छक्का 106, 3 विकेट के नुकसान पर अच्छी वापसी डड्डू रेंजर्स की। 29 रन जोड़े इस पार्टनरशिप ने 16 गेंदों पर। एक बार फिर वो बड़ा स्ट्रोक देखना चाह रहे थे स्लॉग स्वीप, लेकिन इस बार मिस कर गए। वहां खिलाड़ी दूसरा रन लेना चाह रहे हैं लेकिन एक ही रन वहां मिलेगा। वसीम रजा 16 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हैं सिर्फ 10 गेंदों पर और पिछले ओवर में 10 रन जोड़े थे 2 गेंदों पर। राहुल के उस ओवर पर आक्रमण किया था वसीम रजा ने। महत्वपूर्ण ये ओवर, इसके बाद 4 ओवरों का खेल आना बाकी। कुल मिलाकर 26 गेंदें अभी भी डड्डू रेंजर्स के पास। 107, 3 विकेट के नुकसान पर वसीम रजा अब सामने रहेंगे परवेज रसूल के और दोनों बहुत क्रिकेट एक साथ दोनों ने खेली है और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। परवेज रसूल ओवर द विकेट और इस बार ठीक पीछे आए, खेला बात सिंगल के लिए गए हैं और जी हां बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। आदिल गुलडान और वसीम रजा की कमाल की रनिंग रही है आज। आदिल गुलडान की सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट आज किया है आदिल गुलडान ने और ये एक अच्छी चीज इसलिए अभी भी टिके हुए नाबाद 55 रन 39 गेंदों पर अब तक आदिल गुलडान के बल्ले से आए हैं। पहली गेंद पर छक्का, 8 रन कुल मिलाकर इस ओवर से आए हैं। क्या एक और बड़ा स्ट्रोक देखना चाहेंगे इस ओवर में आदिल गुलडान? परवेज रसूल
और इस बार फुल टॉस पर लेकर खेला है और कमाल का ये स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में 4 रन दर्शनीय स्ट्रोक आदिल गुलदान के बल्ले से, और जिगरा दिखाते हुए आदिल गुलदान कमाल के स्ट्रोक्स जड़ते हुए परवेज रसूल के ऊपर दावा बोलते हुए 59 पर 112, 3 विकेट के नुकसान पर। और अब यहां रफ्तार बदली है, एक और बड़ा स्ट्रोक, इस बार हवा में, खिलाड़ी पीछे और कोई गलती नहीं करेंगे, लॉन्ग ऑफ रीजन पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन रीजन पर खिलाड़ी और आदिल गुलदान वापस जाएंगे और चौथा खिलाड़ी 112 के अंतर्गत, लेकिन बेहतरीन पारी खेलकर वापस जाएंगे आदिल गुलदान। Control of the nerves, and Parvez Rasool finally has the last laugh, but Adil Guldan, he was taking the attack on to Parvez Rasool, one of the linchpins of this bowling attack of Bijbehara Sports Club. That was gutsy stuff from a gutsy player, one of the strong contenders of MVPs of the tournament. Adil Guldan goes for a well-made 59 of just 40, and Dadoo Rangers have lost an important wicket, the fourth one, the fifth one at 112. Parvez Rasool picking up 2 for 27 with 1 ball to come in the fourth over, and talking about that counter-attacking cricket against one of the premier spinners of J&K and India, hitting that ball over deep mid-wicket and the ball disappearing, and then that brilliant off-drive of a full toss, hitting it over the top. That was brilliant to watch, and then subtle variations once more. That pace was taken off and fell into the trap, caught at wideish long on for a well-made 59. Parvez Rasool to bowl the final delivery of his fourth. The new batter on strike is Faisal Dar. He too can pack a punch on a given day. He too can go big and hit a long ball. Parvez Rasool. Respect given. Dot to finish. Finishes his quota. 2 for 27 for the day. He's done for the day, Parvez Rasool. And Dadoo Rangers 112 for 4. 4 overs to come in the innings. The highlight of this innings so far has been Adil Guldan, 59. Adil Wani promised a lot, trying to play a rash shot. Scott had covered brilliantly by Ahmed Bande. And now these two batters, the onus is on Wasim Raza and Faisal Dar. Faisal Dar can play a marathon innings, but he has to play a cameo here because 4 overs in the bag for Dadoo Rangers. And here's a bowling change. It's Bilal Ghazi, the death overs specialist for Bijbehara Sports Club, is into the attack. Good strategy so far by the captain of Bijbehara Sports Club, Parvez Rasool, bowling those overs of spin in the middle, keeping the batsman quiet, keeping a stranglehold. And now it's down to the seamers. Bilal is going to bowl his first over. Dadoo Rangers, they have been brilliant in this tournament, and so far 112 of 4. If they can score 50 runs in the coming 4 overs, then 162 will be a challenging total for Bijbehara Sports Club, because we have seen Bijbehara Sports Club struggling with those low scores, and Dadoo Rangers have got a good bowling attack, brilliant bowling attack, brilliant spinners. They have got a genuine leg spinner in the form of Gawhar Leggy, and they have got a decent left arm spinner who's batting right now, Wasim Raza, one of the strong contenders of MVP as well, alongside some other better players of the tournament. Adil Guldan, as here is the next over. Short arm jab in the air, short of the fielder. Has he taken a blinder there? It will be checked and it will be sent upstairs. The batsmen are coming back for the third. Bilal Ghazi, short of a length delivery, is trying to go for that short arm jab. Has the fielder taken an absolute blinder?
Lot of throw. Has he put it down? Let's have a look at this. 3 runs coming of the first delivery, and by the looks of it, it looks like that he has put that ball down. Yes, he has put that ball down. He was trying to catch that, and it was a crowd catch. Faisal Dar is on strike now. Bilal Ghazi. This time he goes leg side with some real power. That's 4 more. That's good batting, good game awareness, good field awareness. He was knowing that there was no one backward of square on the onside, using the pace, getting inside the line, and just using the pace of the bowler. Brilliant batting. 4 more, taking the total to 119. This is the 17th over, and time for both the batters to go after the bowling now. 6 wickets in the bag. They can afford to just attack the bowling now. Extra cover inside the ring. Third man on the boundary. Bilal Ghazi. This time he goes offside. 2 is the call, but they will settle for just 1. So far 8 runs coming of the first 3 deliveries. Wasim Raza, who is the set batter among the 2, he has to just take this bowling on now, because he is one of the important players in that middle order, and now batting in those slog overs. It's not about wild swinging, he just bats normally, and to curb that stroke of his behind the wicket, there's a short fine leg in place. Misses outside the off stump. He was trying to thrash that. There was a fielder at deep point, sweeping on the offside. Fielder at short third inside the ring. I beg your pardon, third man is on the boundary at a wideish position, and there is a fielder at backward of point on the offside. So 2 points, a backward of point and a straightish point on the boundary. On the pads, this time it will be given as wides. Down the leg side, that was there to be taken and hit towards the boundary, because there was no one. There's a huge gap between deep backward square and short fine leg, who is inside the ring. There was runs, but he was not able to put bat on the ball. All he needed was a fine tickle, and the ball would have sped away to the boundary. Bilal Ghazi. Once again, he's trying too much. He's trying to eye mid-wicket. He has to just control his nerves. Bilal Ghazi is bowling at an important stage. 5 balls for just 9. He'd given away 8 runs of the first 3. The second 2, and after that 2 deliveries, he's pulled 2 dots. That wind down the leg side, taking the total to 121. Final ball of the 18th over, 17th over. Once again misses it completely. Swing and a miss to finish the over. 17 done. It's 1-2-1 for 4. 3 overs to come. And Wasim Raza is seen struggling at the moment, not hitting the ball, not finding the middle of the blade, and he's swinging wildly at that. 3 more overs to come, and we must back them up. We must back this player who has played some important knocks in the tournament, Wasim Raza and Faisal Dar. Dadoo Rangers need a big score, and here is Ishmaq, but he can be a weak link with the old ball, and at the back end of the innings he gives away too many runs, but trying to bowl fuller. And the 2 batters, Faisal Dar and Wasim Raza, they have got that capability of putting the ball behind the boundary. First ball, short, wide, up in the air, and taken at deep extra cover, at the deep cover boundary. Good catch. This time he was trying to go offside. A loose shot, and wicket number 5 for Bijbara Sports Club.
आपको उन कामों को करने के लिए मजबूर ना करे जो इंसानियत के लिए एक लानत है। Issued in public interest by Civil Society Forum of Kashmir. क्या आप जानते हैं इशफाक बॉलिंग कर रहे हैं 121 5 खिलाड़ियों के आउट होने पर। इस मरतबा इस गेंद को खेले और खेलते दौड़ पड़े, 1 रन का इजाफा स्कोर में। मुजफ्फर का स्कोर हुआ 122 5 खिलाड़ियों के आउट होने पर। अब वसीम रजा सामना करेंगे। 18वें ओवर का खेल जारी है। अपने उन सामीन के लिए बताता चलो जो अभी अभी हमसे लाइव नशरियात में जुड़ चुके हैं, आज बीपीएल प्रीमियर लीग का फाइनल मैच डडू रेंजर्स और बीपीएल स्पोर्ट्स के दरमियान बीपीएल हायर सेकेंडरी टर्फ मैदान पे जारी है। इशफाक जिन्होंने अभी तक 2 कामयाबियां हासिल की है, अपने तीसरे विकेट की तलाश में इशफाक मार्केट एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। उनका सामना कर रहे वसीम रजा। 122 5 खिलाड़ियों के आउट होने पर एक मरतबा फिर इशफाक आए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की इस गेंद को तिरछे बल्ले के साथ निकालना चाहते थे, गेंद आई विकेट कीपर के पास। अच्छी सूझबूझ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं इशफाक जिन्होंने अभी तक 2 कामयाबियां हासिल कर चुके हैं, और वसीम रजा जिन्होंने 2 बुलंद वाले छक्के भी लगाए हैं। वसीम रजा ही सामना कर रहे, 20 रन बनाकर वसीम रजा सामना कर रहे। अभी तक 16 गेंदों का सामना किया है वसीम रजा ने। इशफाक एक मरतबा फिर गेंद करेंगे वसीम रजा को, गेंद की इस गेंद को खेले वाइड स्ट्रांग की जानिब, बीट मिड विकेट से गए खिलाड़ी, एक दोनों ने गेंद को फील्ड किया लेकिन 2 रन बनाने का मौका था। इन 2 रन के इजाफे के साथ ही 124 5 खिलाड़ियों के आउट होने पर 18वें ओवर का खेल जारी है। 18वें ओवर का खेल जारी है। इशफाक गेंदबाजी कर रहे हैं मार्केट एंड से। वसीम रजा सामना कर रहे हैं इशफाक का। दराज कद के मालिक है इशफाक, गेंद को थामे अपने दाएं हाथ में, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की क्रीज से बाहर आई, इस गेंद को जोरदार अंदाज में खेलना चाहते थे, गेंद में बैट का अंदरूनी किनारा लिया, गेंद आई शॉर्ट फाइल लेग की जानिब, 1 रन बनाने का मौका था। इस 1 रन के इजाफे के साथ ही स्कोर हुआ 123 5 खिलाड़ियों के आउट होने पर। 18वें ओवर का खेल जारी है। अब मंजूर सामना करेंगे इशफाक बजनैन का। दानिश मुजफ्फर सामना करेंगे इशफाक का। दानिश मुजफ्फर फील्ड का जायजा ले रहे हैं, तैयार हुए। इशफाक ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, शॉट गेंद थी क्रीज से बाहर है, इस गेंद को खेले, बहुत ही उम्दा शॉट और गेंद डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। दानिश मुजफ्फर के बल्ले से निकला हुआ पहला चौका। दानिश मुजफ्फर का स्कोर 129 5 खिलाड़ियों के आउट होने पर। 18वें ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 129 5 खिलाड़ियों के आउट होने पर।
बहुत शुक्रिया अमीन साहब। 129 5 विकेट के नुकसान पर 2 ओवरों का खेल यहां से आना बाकी है डडू रेंजर्स के लिए। और दानिश मुजफ्फर और वसीम रजा की जोड़ी मैदान के ऊपर। वसीम रजा जिन्होंने शुरुआत में रन जरूर बनाए थे, लेकिन 18 गेंदों से 23 रन ही अब तक उन्होंने बना रखे हैं। और दूसरे छोर पे दानिश मुजफ्फर 2 गेंदों पर 5 रन उन्होंने बनाए हैं और अभी भी 12 गेंदें बची हैं। और प्रोजेक्टेड स्कोर इस रफ्तार से 142 और उससे आगे जाना चाहेंगे डडू रेंजर्स, क्योंकि विकेट्स इन हैंड से 5 विकेट अब तक गंवाई है डडू रेंजर्स की टीम। 19वां ओवर बिलाल गाजी के हाथ में गेंद रहेंगी, जो कि 19वां ओवर प्रारंभ करेंगे। कुछ तब्दीलियां जरूर फील्ड में हो रही है वसीम रजा के लिए, क्योंकि वसीम रजा इंपैक्टफुल प्लेयर हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। अगर बात करें सेमीफाइनल्स में 29 रन बैट से और 3 विकेट गेंद से इस खिलाड़ी ने ली थी। शॉर्ट थर्डमैन पर एक खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी है, वाइडिश मिड विकेट, डिफाइन लेग पर एक खिलाड़ी। बिलाल गाजी नए ओवर के साथ तैयार हो रहे हैं और उनका सामना वसीम रजा करेंगे। पहली गेंद को ऑन साइड की ओर मोड़ा, दूसरा रन वो देखना चाहेंगे, फील्डर के ऊपर दबाव और दी हां, दूसरा रन भी अर्जित करेंगे और ओवर थ्रो, लेकिन उसका ज्यादा खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा क्योंकि पीछे बैकअप 2 रन अर्जित करते हुए नए ओवर की पहली गेंद पर। और इसे एक सिंगल के 131 5 विकेट के नुकसान पर गिरा। गेंदों का खेल आना बाकी। वसीम रजा अब चले गए हैं 25 पर। 19 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है, 2 छक्के अब तक वसीम रजा के बल्ले से लगे हैं। बिलाल गाजी अगली गेंद के साथ और इस बार इंप्रोवाइजेशन देखने को मिला था और वाइड बॉल का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ। ये एक्स्ट्राज जरूर यहां पे परेशान करेगी बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब को। स्लागोर से और वसीम रजा की अगर हम बात करें 25 पर बल्लेबाजी करें, 19 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है। वाइड गेंद के साथ 132 5 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद धीमी गति से बड़ा स्ट्रोक जरूर खेला, लेकिन वहां पीछे खिलाड़ी अहमद पांडे लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक ही रन मिलेगा। अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉलिंग करते हुए यहां बिलाल गाजी। यह अंतिम ओवर इसके बाद आना बाकी। 133 5 विकेट के नुकसान पर 10 गेंदों का खेल अभी भी यहां से आना बाकी। इरशाद भाई, किस तरह आप वसीम रजा की इस पारी को देखते हैं? फिनिश करना पड़ेगा बची हुई इन 10 गेंदों पर। Ten more deliveries remaining. They need to score as many runs as possible. Danish Muzaffar is capable of hitting a long ball. So is Wasim Raza. 26 of 20. That's not helping the cause of Dadoo Rangers at all. Change in field. Deep long leg is on the boundary. And there is a fielder coming inside the ring at mid-off. This time he goes for the big one. It's gone up in the air. Taken in the deep. Good catch. Wicket number 6 for Bijbihara Sports Club. And Danish Muzaffar perishes. Bilal Ghazi picking up his first wicket. Slower delivery into the pitch. Batsman was trying to go across the line. High on the bat. Easy catch for deep backward square leg. And that is another wicket. An important juncture. 133 for 6. So far 3 runs and a wide have come up in this over, and then that wicket of Danish Muzaffar. Danish Muzaffar, he bats well, he picks up runs for fun, but today nothing for him as well. Here comes Nasir Rasool. Strike rate of 143. That strike rate is needed at this stage of the game, because you need to hit sixes and boundaries right from ball 1. No time to waste, no deliveries to waste, because your team needs runs. They need brisk runs, they need a cameo. Nasir Rasool is definitely capable of playing a cameo at this stage. He's on strike, and Bilal Ghazi so far has given away 13 runs in his second over. Crowd in numbers, they are still coming, are still making their way into the ground. Bijbihara Premier League Season 3, and this is the final between Bijbihara Sports Club and Dadoo Rangers.
Dadoo Rangers were put into bat first after Bijbehara Sports Club captain Ishfaq Bresnan won the toss. Understandably so, because they like to chase on this pitch and they have got that support of the home crowd, home conditions. The advantage lies with them as well, but take nothing away from Dadoo Rangers. They have been the unbeatable side so far in this tournament. That's a lovely shot. Stand and deliver stuff from Nasir Rasool. First ball, he gets a maximum. Much needed from Dadoo Rangers' perspective. Short, wide, and helped on its way. That was brilliantly smashed. There was a fielder, but he had no chance as that ball sailed over his head into the crowd. Bilal. This time he comes out of the crease. He's trying to go down the ground towards that extra cover and long off region. I was intelligently bowled, following the batter on that occasion. Bilal Ghazi slowing the delivery. It's a dot one. 139 for 6. One more ball to come in the 19th. Nasir Rasool, can he get another 6? Once again manages to hit it off the thighs. Will be signalled as a leg bye. Here is the signal. Finishes the over with a leg bye. 19 done. It's 140 for 6. 6 deliveries to come. Wasim Raza is off strike because taking that leg bye and Nasir Rasool is on strike. And who will bowl the final over? It will be seen. Yes, it is Ishfaq Butt. And Ishfaq Butt would like to find the block hole. If he tries to find that block hole, Nasir Rasool is a good hitter down the ground. He likes to maintain his posture and then go with the downswing with the full flow of the bat. If he manages to hit a couple of sixes in this over, and anything scored above 15 runs in this over will be a bonus, because 140 is already on the board, and 15 or more runs in this over will take them past 150. I think it will be a good score because runs on the board in the finals matter. Ishfaq Bresnan to bowl the final over of the innings of Dadoo Rangers. He's got protection everywhere. Nasir Rasool, full length delivery, a full toss, a low full toss, and that's well bowled. If you have long on, long off, back on the boundary, you're trying to bowl a fuller length delivery, and then that comes out as a low full toss. You have protection down there, and single of the first ball brings Wasim Raza back on strike. 1 for 1 for 6, Wasim Raza. He has to score those runs in the form of sixes in this over. Backward point inside the ring. Third man inside the ring. Long off, long off, long off, long on the boundary. Third man will stay inside the ring. He bowls wide. Wasim Raza will go in that region. He manages to hit it exactly in that region of which I was talking about, using the pace. That is well played, Wasim Raza. 4 more runs to the wideish third man region. He knew that Ishfaq will be bowling on a fuller length, and that too outside the off stump, because he had long off on the boundary. Third man was up inside the ring, and he was always flirting with the danger, because I know, every one of us know, that anything outside the off stump, if a batsman gets an edge on that, third man up, that's always going to be 4 runs. Much needed boundary takes them to 145. Ishfaq this time is trying to go across the line. That's an ugly hoik, an ugly swing attempted. Misses the line of the ball completely. It's a bye to bring Nasir Rasool back on strike. 146 for 6. 3 more balls to come in this over. Well, Wasim Raza suddenly has lost his shape, and he has lost that momentum which he had got in that over of Rahul by hitting back-to-back sixes down the ground. Then suddenly he tried to play some cross-bat shots. And he has scored only 1 boundary since that over, in which he hit 2 sixes down the ground. Ishfaq once again inside edge, and that was brilliantly placed, but there was a fielder at short fine leg, cuts that one off.
inside edge. You can't set field onto that, but since the captain had shot fine leg inside the ring, otherwise that would have been a boundary had he been able to place that either to his right or to his left, because Asif Rasool is not a swift mover in that field. We have seen that. Ishfaq Bresnan so far has given away only 7 runs in this over, including a leg bye, 2 more balls, and final 2 deliveries of the innings of Dadoo Rangers coming up. 1 4 7 for 6. Will they get to that 150? Wasim Raza. This time he goes offside with some real might. Fumbles the fielder there at wideish long off. Will allow the batsman to come back for a couple. Wasim Raza moves to 32. 149 for 6. He might not have gotten those boundaries in the previous overs, but he has scored 32 of 23. Impressive stuff once more, and he's becoming a strong contender of the most valuable player of the tournament. Final ball of the innings coming up. Wasim Raza has to hit this one out of the ground. Can he control his nerves and put this one away? He has put this one away. It's in the air. Fielder tries to get around. He catches it near the boundary. It's a wicket of the final ball. Ishfaq Bresnan gets the last loft, 3 for 23, and the innings folds up at 149 for 7 of those 20 overs. 150 is going to be the target for Dadoo Rangers. Let's talk about this score. 100 for Bijbehara Sports Club, 149 for 7. Once again, that paltry total, because 160 is that par score on this pitch. 149 for 7. Bijbehara Sports Club have been found wanting when it comes down to these low scoring thrillers. Are we going to have another low scoring thriller? Is this score of 149 for 7 enough for Dadoo Rangers to challenge Bijbehara Sports Club and be crowned as the champions? इससे पहले एक मुकाबला लीग स्टेज में हुआ था इस कंपटीशन के अंदर बिजबेहारा क्रिकेट क्लब और डड्डू रेंजर्स के दरमियान, और उसमें हमने देखा था कि 133 रन बोर्ड पे जड़े थे डड्डू रेंजर्स ने और जीत दर्ज की थी। और फाइनल मुकाबला 149 रन बोर्ड पे हैं डड्डू रेंजर्स के लिए, और एक अच्छा कंटेस्ट देखने को मिलेगा दोनों टीमों के दरमियान, क्योंकि डड्डू रेंजर्स के पास एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। और फिलहाल हम आपके साथ जुड़ेंगे ब्रेक के बाद, जहां चेज के लिए आएंगे बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब और चेज करेगी वो 150 का टारगेट उनके सामने रहेगा। और ये आप देख सकते हैं मैदान के अंदर जो दृश्य है, बहुत सारी तादाद में लोग जो है वो इस बड़े मुकाबले को देखने के लिए आए हैं। और फिलहाल आपसे लेंगे अलविदा और आपसे जुड़ेंगे दूसरी इनिंग्स में, जहां बिजबेहारा चेज करेगी 150। ड्रग्स की वजह से आपकी आने वाली औलाद खतरनाक जिस्मानी और दिमागी बीमारी की शिकार हो सकती है। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक एबनॉर्मल औलाद को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप मिसकैरेज के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स बहुत बेरहम हैं, इनका सहारा ना लीजिए। ये न सिर्फ आपको बल्कि आपकी आने वाली औलाद को भी जिस्मानी और दिमागी तौर पे तबाह व बर्बाद कर देते हैं। Issued in public interest by Civil Society Forum of Kashmir.